नमस्ते। हम हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज जब गांधीज डेथ एनिवर्सरी है और हम गांधी आश्रम में खड़े हैं, तो हम जानेंगे कि हमारे हिंदुस्तान का ह्यूमन राइट्स स्टेटस क्या है। आपको पता है कि गांधी किस तरह से ह्यूमन राइट्स के लिए और भारत की आज़ादी के लिए किस तरह से उनने संघर्ष किया था। हाल ही में अहमदाबाद में ह्यूमन राइट्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे बहुत दिग्गज और वेल नोन ह्यूमन राइट्स पर्सनालिटीज़, एडवोकेट्स एंड जर्नलिस्ट आए थे। तो हम जानते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं। पर उसके पहले प्लीज़ आप हमारे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कॉलिन गंजाल्विस क्या सोचते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स के स्टेटस को, और इवन हमारे डेमोक्रेसी के बारे में क्या उनकी राय है। प्लीज टेल अस व्हाट यू थिंक ऑफ द ह्यूमन राइट्स, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया currently. Well, the state of human rights in India has always been very precarious. But now, after this government came to power several years ago, and after its thumping majority in parliament, the situation has become very stressful and acute. You look at civil and political rights such as torture, executions, disappearances, and so on. Or you look at civil and political rights, the right to food, the right to healthcare, the right to housing, the right to education. I think India is sinking, and in the world statistics of its status on human rights, I think it is falling lower and lower and lower. जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार पारुल शर्मा से कि उनकी ह्यूमन राइट्स के लिए क्या राय है। नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा, हमारे देश में ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार का क्या स्टेटस है, क्या स्तर है, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स का मतलब हमारे जीवन का नैतिक मूल्य, हमारे पास शिक्षा का समान अधिकार, धर्म को चुनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी और अपने अनुसार जीने की आज़ादी का एक लक्ष्य बना हुआ है, एक नियम कानून बने हुए हैं। और जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 76 साल की आज़ादी के बाद भी, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम आज भी अपने नैतिक मूल्यों को लेकर के, अपने समान अधिकार को लेकर के, अपनी समान शिक्षा की बात को लेके, समान स्वास्थ्य की बात को लेके, धर्म की रुचियों को लेके अभी भी संघर्षरत हैं और हम आपस में तनातनी के माहौल में जी रहे हैं। और जबकि इसके मामले में हम चाहते हैं कि सब लोग एक स्वतंत्र जीवन जी सकें और अपने मन और मस्तिष्क को, अपने दिलो दिमाग को बहुत साफ़गोई से रखते हुए, एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते हुए, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए, एक दूसरे को संबल देते हुए समान अधिकारों की बात करें और एक दूसरे की हर चीज़ में सहयोग करें और एक दूसरे को प्यार और विश्वास से जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान कर सकें। लेकिन फिर भी जो नैतिक मूल्य हैं, जो मानवाधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े काम करती हैं लगातार। और हमारे देश में भी बहुत तरह की कार्यशालाएं, बहुत तरह की बातें उठती हैं। उन कार्यशालाओं के द्वारा जागृति पैदा करने की कोशिश की जाती है, आम नागरिक तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, उसे बताने की कोशिश की जाती है कि आप सिर्फ साधारण नागरिक नहीं हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक ताकत है और आपके विचार, आपकी उपस्थिति, आपका कहना सुनना, आपका बात करना, आपका कहीं धर्म को लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबको स्वतंत्र होकर और जागरूक होकर जीने का पूरा अधिकार है। अब जानते हैं कविता श्रीवास्तव, जो कि PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ की वरिष्ठ मेंबर हैं, वो इस बारे में क्या सोचती हैं। I think the status of human rights in India is very, very poor. We rank, as far as the freedom index goes, we rank 150th. We've really, really fallen in hunger. The hunger index shows that we're 117 or something. Worse than Pakistan. In South Asia, all the other countries are better than us.
Of course, we keep competing. They're ahead, sometimes we are ahead. So, I mean, that maybe you may say that, well, let's dump that ranking. Let's not look at it via that ranking. But it's shocking the way the attack on freedom of speech and expression has happened in this country. All dissenters, may have a case against them, maybe behind bars, maybe being investigated by ED, Enforcement Directorate, the CBI, some economic, police of an economic wing. So it's crazy how top human rights activists are, being questioned, are being harassed, so many of them arrested. Look at the way the recent NewsClick case played out. Over 108 people were raided, mostly in Delhi, but some outside Delhi, in Maharashtra and Andhra and Telangana. Now, it's shocking that basically there are no grounds of arrest of most people that they arrest. Like, look at the oldest case, the Bhima Koregaon, and how the top intellectuals and human rights workers and trade unionists, lawyers are put behind bars, 16 of them. Father Stan died. He was thoroughly neglected. I mean, what do you gain out of incarcerating an 83-year-old person? You just want to torture. You just want to show that you can do anything to people. Putting an academic like Anand Teltumbre behind bars, a thinker like Gautam Navlakha, a trade unionist like Sudha, lawyer come trade unionist. So many cultural activists from Maharashtra, Kabir Kalamanch, Sudhir Dhawale. And even, they've not even spared senior women like Shoma Sen, who's got arthritis and is treated so badly in jail. Similarly, if you look at the CNRC protests, they finished it by throwing so many young people into jail and using terror charges. In Bhima Koregaon, in the name of Maoism, they did all that. In the Delhi situation, CNRC fallout and arrest of people. Of course, there was an attack on Muslims in what followed in Delhi. And then you end up throwing young Muslim men in jail and some women. And it's so sad that people are completely innocent. They're languishing behind bars. Just sort of statement or two that they may have made, which is neither here nor there, The right to hold views is somewhere being attacked. Leadership is somewhere being attacked. And to top it all, journalists are continuously being put behind bars. Uttar Pradesh has the worst track record. Through COVID also, you did not spare journalists. Journalists doing their job, like showing how midday meal is bad, even they will be thrown behind bars. And the worst case is the NewsClick. As I said, over 100 people were raided, and after that, Probir and the HR head are both picked up and thrown into jail, and the HR head is waist down, completely physically challenged. So there was a time when he was, during his incarceration, he's still incarcerated in jail in Tihar. He was kept on the first floor and the bathroom was on the ground floor. Somebody who can't walk, and that kind of torture. And Probir, who's a serious heart patient, he's inside jail. So it's kind of endless. We don't know who's going next. There's absolute surveillance. Look at Pegasus, look at Netwire. In Bhima Koregaon cases, the computer were hacked through Netwire. And Pegasus has been used for phones. And now we are hearing that some new surveillance technology is being used and some journalists have been picked up. The Wire editor once again. So this is as far as, the top human rights workers, journalists, thinkers, academics. You don't know when your laptop
and your work of 30 years, on your laptop, your devices will be picked up and taken away, and all your work is gone. I mean, that's what in one of the news click cases, Nilanjana Mukhopadhyay, he lost just about all his pen drives. They took away, he seized his computer, tablet, pen drive, mobiles, and he had done many videos, the history of India, and in the Lok Sabha TV. And with great difficulty, it got those 50 DVDs. They took that away. His books. I mean, it's crazy what is happening in India. So I would say, I mean, that apart, that why was Father Stan targeted? Because he raised the question of tribals languishing under various sections, terror charges and others, some years together without any hearing. So what's happening to the working classes, what's happening to the Adivasis, what's happening to the Dalits, that goes without saying. I mean, their human rights, if they could not raise their voice, the people who were raising their voices, the human rights bodies, individuals, journalists, they are being targeted. So basically, who controls the narrative? The whole thing of targeting is that the media now, they have completely bought. The dissenting media is under the scanner. All those who still speak out are, either inside or outside, maybe not for too long. That includes me. We don't know when the crackdown will happen on any of us, when the crackdown will happen on the PUCL, we don't know. So these are very, very tough times, and times in which actually there's so much of fear. How can human rights be expressed if there is fear? The first tenet of the Universal Declaration of Human Rights is all humans are born equals. All human beings are free. Both these tenets seem far, far away. What do you have to say about democracy in India? It's been described as partial democracy or even electoral democracy. And many bodies have said that democracy in India is really just a sham. Absolutely. It's called an electoral autocracy. Absolutely. Where are the spaces to protest? Where are the spaces to come together? In Rajasthan, we had the election this time, and the Election Commission imposed all over the state Section 144. What was the emergency being caused? An election is a normal thing. It happens. It goes parallel with people's everyday existence. Why did they have to have a Section 144 imposed all over the state? It was completely illegal. And no city these days you can't take out rallies on most roads. You can't reach, what are the modes of the week if not come together on the streets and raise your voice? But it has to be enabled, facilitated by governments. That's your democratic right to raise your voice. After all, democracy is a contestation of ideas, contestation of, power, and people have a right to put across their views and try to get the state to change its policy. So, I think India, for all purposes, is ceasing to be a democracy. We don't know when the crackdown will happen. Look at the media. The other day, the media was one of the strongest pillars of democracy. It every day brought to the powers that be an accountability. It was the eyes and ears and mouth of the people, vox populi, voice of the people. But they've been completely compromised, either through the way ownership of media, which is the corporates who need the government, for their whatever profits and their whatever, their business. But
At the same time, individual journalists are absolutely alone. They don't know how to stand and take cudgels on their own, either with their company or with the state. So if the journalists are completely attacked, there are no spaces to come together, to gather, to protest. You are continuously living in the fear of some cases or crackdown. How can you call it a democracy? And after the way the Prime Minister, constitutional head, went ahead with the 22nd January event in Ayodhya, where the consecration of Ram idol happened, where he kept telling us that it was from the divine the journey began for the nation, where he said Ram was the constitution, Ram was the soul of this country, Ram was Ram is eternal. If a constitutional head tells us all this and tells us that after years of slavery, this is a triumphant act. After all, the freedom struggle was a triumphant act. We gave ourselves a constitution some years later, 74 years ago. We're now in the 75th year. And we gave ourselves a constitution of the people, by the people, for the people. What happened to that? When the Prime Minister stands at the helm of a religious event of one section of people and states that this is it. I almost felt that we are part of a theocratic state. Where what happened to plural India? What happened to Sarva Dharma Sambhav? What happened to inclusivity? So I think democracy can only exist if the powers that be work very hard for Sarva Dharma Sambhav, for equality of all, and for agreeing to, for the people to be a mirror to them, the media to be a mirror to them, and a compliance with the Constitution. If all that doesn't exist and it's only some manipulation, then how can democracy survive? And the very important thing is that what's happening in India today, which is the finishing of democracy, has a majoritarian consensus. A large section of people, those who can think, those who are the, who not necessarily have to even struggle, and the struggling ones, and the struggling population, many of them, a major section is in agreement. So if that be the case, democracy is getting weaker and weaker. That's all we can say, where voices of sanity are now being pushed to the margins. नर्मदा बचाओ आंदोलन की वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर, वो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? अभी भी हिंदुस्तान में 10 दिसंबर को तो मानव अधिकार को सब याद कर रहे हैं, लेकिन कई प्रकार से मानव अधिकारों को कुचला जा रहा है, और विशेष करके जो प्रकृति निर्भर समुदाय है उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और जो श्रम निर्भर है उनके भी साथ हो रहा है। तो ये दो प्रकार की पूंजी लेकर जो पीढ़ियों से जीते आए हैं, जिन्होंने श्रम का स्थान और सम्मान बचाया, सादगी और स्वावलंबन वाला जीवन निभाया, जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को बचाया, और उसी के कारण वायरसों से हम कुछ हद तक बच गए हैं, लेकिन उनका ही अवमानना के साथ साथ जीने का आधार जो है वो छीना जा रहा है, और इसीलिए ये मानव अधिकारों को कुचला जा रहा है। मानव अधिकार में हम लोग अगर इज्जत से जीने के अधिकार को मानते हैं तो उसमें स्वास्थ्य, उसमें रोजगार, उसमें शिक्षा, उसमें आवास, ये सब बातें आती हैं। लेकिन आजकल कुचलने के 2-3 पैमाने हैं। एक पहलू ये है कि जो संसाधन है, जो जीवनाधार है,
संपत्ति नहीं है, संसाधन है। वो आज पूंजी और बाजार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तु रूपी साधन माने गए और गीधों की नज़र उसमें है, ज़मीन पर है, पानी पर है, हर एक पर धंधा चलता है। आज अभी वन सुरक्षा कानून 1980 का जो बदल दिया और बिना चर्चा संसद में कानून बदलना 3 मिनट में भी होता है, तो इसमें सब में हमें दिखाई देता है कि उन संसाधनों के ऊपर ये करोड़ों रुपयों की कमाई करते हैं। अंबानी के करीबन 7,000 से ज़्यादा जगह पर एग्रो प्रोडक्ट्स जो हैं, खेती माल जो है, जो हमारे अन्नदाता ही पकाते हैं, जिसमें ज़मीन मालिक ही नहीं, खेत मजदूर भी है, महिला भी है, लेकिन उनको ये जिस प्रकार से बेचते हैं बिचौलिया बनकर, उससे ये करोड़ों रुपए कमाते हैं और खेती हर के लिए घाटे का सौदा होता है। पानी आज नदियाँ बर्बाद की जा रही है। बड़े बांधों से नदियाँ न केवल प्रदूषित हो रही हैं, पर नदी किनारे पीढ़ियों से बसी हुई संस्कृति और प्रकृति को ख़त्म कर रहे हैं। तो लोग लड़ते 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 कुछ अधिकार लेते हैं, फिर भी उसमें बहुत बड़े भुगतने की बात होती है। दूसरी बात यह है कि मानव अधिकार में एक आज़ादी की बात भी है। संघर्ष भी जो करना पड़ता है जल जंगल ज़मीन के लिए, उस संघर्ष को भी आज अवकाश नहीं दिया जाता है। दलीय राजनीति में, चुनावी राजनीति में विरोधी दल को अवकाश नहीं दिया जाता है। उनके ऊपर विविध प्रकार के हथियार चलाते हैं, एजेंसीज के भ्रष्टाचार के आरोप के। अब क्या सच क्या झूठ, इसमें चौकसी को हम कभी विरोध नहीं करते हैं, वो करते, लेकिन उसमें भी जो पूरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं होती है, संवैधानिक चौखट में नहीं चलता है, तो वो एक साजिश होती है। और वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कर रहे हैं। वैसे ही जो आदिवासी लड़ते हैं, अब गढ़चिरौली जिले में, महाराष्ट्र में, तोड़गट्टा में पूरे लोहे की खदानों से जो भ्रष्ट हो रहे थे, ध्वस्त हो रहे थे और जिनके पूरे अस्तित्व खत्म करने जा रहे थे, वो 250 दिन से बैठे। मेरा चंद्रपुर में पुरस्कार का एक कार्यक्रम था, मैंने भाषण में उसको ज़्यादा उजागर किया। थोड़े ही दिनों के बाद उनका पेंडॉल ख़त्म करके उनको ध्वस्त कर दिया, प्रमुख 6-7 लोगों को जेल में डालकर। तो ऐसा हर जगह हो रहा है। और जहाँ लोग रोजगार के लिए लड़ते हैं, आजीविका के लिए लड़ते हैं, उनको भी विकास विरोधी मानते हैं, राष्ट्रद्रोही मानते हैं, तो कोई भी धारा लगाते हैं। अभी तो क्रिमिनल एक्ट्स भी बदल गए हैं। अब तो 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के बदले 60 दिन भी दे सकते हैं। तो ये सब जो हो रहा है उसमें आज़ादी भी छीनी जा रही है। एक बाजू आज़ादी का अमृत महोत्सव, दूसरी बाजू हमको नए सिरे से आज़ादी आंदोलन एक एक प्रकार से करने पड़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन, भारत का जो डेमोक्रेसी है उसको पार्शियल डेमोक्रेसी या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी भी कहा जा रहा है, आपका क्या कहना है? Well, India is just a pretended democracy. It's a pretense of democracy. And because we have parliament which functions in quite a bad way actually, and because we have a freedom of people to publish newspapers, but all those newspapers are bought by corporate houses close to the government, the pretense of democracy is quite extensive. So on the face, superficially, it looks like a democracy. But when you look at the conditions of the people and just look at hunger, for example, when you have something like 50% of the population, perhaps more, 600 million people below a poverty line, living on the brink of hunger and starvation, then you realize that this democracy is just a pretense and just a farce. If you look at the killings in some states, where the police have been given authority to shoot people in the knees, shoot people in the ankles, disable them, because they have some grievance against them and some suspicion about them. But the right to shoot and kill and the right to disable permanently is a frightening aspect of Indian society. If you look at the right to education and the millions and millions of children dropping out of school, going back to the streets, whereas we have a Right to Education Act and they should be in schools. Look at the right to healthcare and look at our public hospitals and look at the desperate situation those hospitals are in.
You should have seen these hospitals functioning during the period of COVID, where pregnant women and lactating mothers in several states were not even admitted to the hospital in emergencies because the hospitals decided only COVID cases would be admitted. The right to housing is awful, with at least one government, and this is common to many governments in India, at least one government in the state of UP using bulldozers to smash the houses of the poor. Can you imagine? So it's just unbelievable the way rights are deteriorating sharply in this country. No, I'm not saying that. I mean, in India, every religion has had its space under the Constitution. Article 25 was precisely that. I had a freedom of conscience. I had the right to practice, propagate any belief, my faith. So if there is a situation in which one religion of the majoritarian community is shown to be the religion, I mean, like almost the religion of the state, when the statement is made that Ram is for all, so at the same time you could say Allah is for all. No. So it's too, I mean, state has come too close to religion. Religion is my personal matter. And Article 27 very clearly says that I cannot use taxpayers' money to sit and propagate any religion. The 22nd January event was not merely public money. We know that there was a lot of state expenditure that went into it. It was the Uttar Pradesh state's event. It was just not a trust doing an event. Apart from the fact that the head of the master of ceremonies was the Prime Minister of India. I mean, it was just a personal, visit to a temple and personally sitting. Nobody would have an issue. But it was made into a public event, and particularly what followed after the consecration was very clearly to show that there's been a great triumph of this consecration of the idol, is a great triumph of is a slavery, a symbol of slavery that was not only removed, but finally we've managed to erase it altogether. Erase it now from the minds and the hearts of the people. So all those kinds of statements, he could have distanced himself totally from this event. At the end of the day, building a temple on a structure that was razed, and where the Supreme Court in its judgment, in the 1047 pages judgment on Babri Masjid, on the title suit of the Babri Masjid, very clearly said that was a criminal act. The attack on it was a criminal act. The raising it to the ground was a criminal act. So you can't glorify once even the courts have said you may have won the title suit. That's another thing. जनतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं. हम तो मानते हैं कि पहला स्तंभ जनता है, उसको कभी लिया नहीं गया स्तंभों में नौकरशाही है, स्तंभों में जनप्रतिनिधि जो चुनावी राजनीति से आए हुए हैं. हमारे जैसे को जनप्रतिनिधि नहीं मानेंगे ये, लेकिन वो है. तीसरा न्यायपालिका है, चौथा मीडिया है. अब हर स्तंभ को जैसे धीमक लगती है ना, उस प्रकार से कुछ हो गया है, क्योंकि वो उनका जो कर्तव्य है, जो संविधान ने दिया है, संविधान की चौखट में बने हुए अलग अलग कानूनों ने दिया है, लेकिन वो कर्तव्य वो पार नहीं कर रहे हैं. अभी जो 2 सीनियर एडवोकेट्स ने बात रखी, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी क्या दिखता है और क्यों ऐसा सीनियर वकील कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जनता का सही प्रतिनिधित्व करना, उनका अधिकार दिलाने में कमज़ोर साबित हो रहा है. कहीं ना कहीं दबाव प्रभाव आ रहे हैं. तो आजकल एक न्यायपालिका के फैसले का अमल नहीं होता है, तो फैसला मिलता है पर न्याय नहीं मिलता है. और उसके लिए हमको जो कोर्ट की अवमानना वाली केस यानी कॉन्टेम्प्ट की केस दाखिल करनी पड़ती है, उस पर सुनवाई नहीं होती है.
नॉर्मली कॉन्टेम्प्ट की केस फाइनल हियरिंग के साथ ले लेंगे, ऐसा कहा जाता है। अवैध रेत खनन की मेरी केस मैंने सालों तक चलाई, सभी ऑर्डर्स हमारे हाथ में हैं, क्योंकि उससे नदी बर्बाद हो रही है नर्मदा जैसी। लेकिन उस पर की कॉन्टेम्प्ट की केस कोर्ट ने, मैं पिटिशनर इन पर्सन होते हुए, मुझे खबर न करते हुए एक बार लाई कोर्ट के सामने और खारिज कर दी। तो ऐसा थोड़ा हो सकता है। वो हमको ये लगता है चीफ जस्टिस रमन्ना ने जो कहा था वो सही है कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बोझ आता है कॉन्टेम्प्ट कोर्ट का, कॉन्टेम्प्ट केसेस का। तो हर स्तर पर जो अधिकारी है, जो प्राधिकरण है, जो लोअर जजेस है, जुडिशियल फोरा है, उन्होंने जजमेंट्स का, फैसलों का पालन करने के लिए कमर कसनी चाहिए, ये हमें मंजूर है। पर जहाँ भी जो भी कॉन्टेम्प्ट की केस लगती है उसकी सुनवाई नहीं होती, ऐसा दिखाई देता है। उसी प्रकार से संसद, अब विधानसभा, विधान परिषद तो बहुत ही थोड़े राज्यों में है, पर विधानसभा, विधान परिषद, ये दो राज्य स्तरीय निर्णय जो कानूनी होने चाहिए, जो संवैधानिक होने चाहिए, उसके लिए बने हुए जनतंत्र के मोर्चे हैं, मंच है। लेकिन क्या हो रहा है उसके अंदर? कोई भी जनता के सही सवाल पर वहाँ चर्चा ही नहीं होती है। अगर कोई विधायक तैयार हुए पार्टियों के आपस के आरोपों के पार जाकर जरा जनता के जो आरोप है, जो समस्याएं हैं, उसको लेने के लिए, तो भी उनके लिए अवकाश नहीं होता, स्पेस नहीं होती है। सांसदों को बाहर करते हैं ये न के न कारणे, और फिर कानून बदलते हैं। ये सब जो हो रहा है, लॉकडाउन में कितने घंटे में कितने कानून बदले हैं। तो ये सब जो हो रहा है उसके कारण संसद बाह्य राजनीति जो है, जिसको जन आंदोलनों की राजनीति एक प्रकार से माना जाता है, वो हम बहुत महत्व की मानते हैं। उसकी सशक्ति बचाना जन आंदोलन का एक मंच है, मोर्चा है, और वो भी जनतंत्र का मुख्य आधार बनाना। और वहाँ जब सवाल खड़े होते हैं तब अंदर चर्चा होती है, कुछ तो कानून होते हैं। तो ये भी हमारे अनुभव है। पर आज की सरकार अगर संवादशील नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो फिर संभावना नहीं होती है कि संगठन या जन आंदोलन, जिनको आंदोलन जीवी कहते हैं, तो हम स्वागत करते हैं उसका। आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है, यही मोदी जी कहना चाहते हैं ना। लेकिन आंदोलन जीवी, आंदोलनकारियों के साथ, जिनमें दलित है, आदिवासी है, महिला है, वो कभी बातचीत नहीं करते। नहीं तो मणिपुर की महिलाओं के साथ बातचीत हो जाती। जहाँ भी लोग लड़ रहे हैं अपने घर बचाने के लिए, फ्लड अफेक्टेड चेन्नई के स्लम्स क्या भुगत रहे। नर्मदा में आज हजारों घर उद्ध्वस्त हो गए, हजारों एकड़ जमीन इस साल डूबी। क्यों डूबी? प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए गेट्स नहीं खोले गए। पर एक ही प्रधानमंत्री है जिन्होंने हमारे साथ कभी चर्चा नहीं की है। नहीं तो हर प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वीपी सिंह हो, देवेगौड़ा जी हो, नरसिंह राव हो, हमारी चर्चा तो होती ही थी। तो आज ये भी हम देख रहे हैं कि नाम तो जनतंत्र का है, पर जनतांत्रिक प्रक्रिया जो चलनी चाहिए सत्ताधीश और जनता के बीच में, वो नहीं चलती है। इसलिए राहुल गांधी जैसे जब जनता के बीच में उतर आते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। हम कोई कांग्रेस के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं, लेकिन वो संवाद तो खुले रूप से करते हैं। यह हर राजनेता का कर्तव्य है। और हमने तो उनको एक आवेदन देकर कहा कि आपका दल और जन संगठन, इनके बीच में नियमित रूप से संवाद हो, सुनवाई हो, इसके लिए कुछ एक आयोजन करना, प्रक्रिया तय करना ज़रूरी है। हमको तो यही लगता है। इसलिए जनतंत्र में भी अगर वैश्विक पूंजी प्रभाव दबाव डालती है और उसके तहत कानून बदलते हैं, अब बिजली बिल नया रुका हुआ है, डीबीटी राशन के बदले पैसे डालने का निर्णय नीति आयोग का 2016 से रुका हुआ है। 4 कोड्स, 29 श्रम कानून खत्म करके लाने के बाद अभी रुकी हुई है, पर वो चुनाव के मद्देनजर रुका है। लेकिन अन्यथा जो जो निर्णय हुए हैं वो जनतंत्र के खिलाफ, जनता की दृष्टि से जिन मुद्दों को प्राथमिकता होनी चाहिए, राशन है, पेंशन है, वेतन है, रोजगार है, उनको प्राथमिकता नहीं है। तो बजट भी उस दिशा में नहीं बनता है। और 2 बजटों के बीच में कोई भी निर्णय होते, संसद भवन का निर्णय क्या बजट में दिखता है, प्रतिबिंबित होता है? नहीं। इतने हाईवेज और फ्लाईओवर्स होते हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात आगे बढ़ती है। तो 2 बजट के बीच में कॉरपोरेट्स के पक्ष में निर्णय लेना, क्योंकि अगले चुनाव के लिए उनसे चंदा चाहिए होता है,
ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। इसीलिए संविधान का समता न्याय इसको कुचला जा रहा है। और जाति और धर्म के नाम पर जो आज आगे बढ़ाई जा रही है पूरी प्रक्रिया, वही संविधान और जनतंत्र के खिलाफ है। अगर जनता का अधिकार है तो ग्राम सभा का अधिकार है, वैसे ही हर व्यक्ति हर समुदाय का अपना धर्म पालन का अधिकार है। पर उनको सीधे सीधे हिंसा के तहत बलिदान या शहादत जो भी कहो देने पड़ रही है। तो हम जब मेरठ और मुजफ्फरनगर में फैक्ट फाइंडिंग को गए तब भी वही चित्र देखा कि आशीर्वाद है राजनेताओं का इस प्रकार की हिंसा को। हाथरस के हम फैक्ट फाइंडिंग किया तो क्या निकला, जाति के नाम पर जो थोड़ी सी ज़मीन उनको मिली थी उसके खिलाफ एक प्रकार से बलात्कार हुआ और उनका स्वागत उनकी जाति के महासभा के लोग करने आए थे हमारे सामने और राजनीतिक आशीर्वाद उनको था। इसलिए आज तक भी एक व्यक्ति पड़ा है जेल में, लेकिन 4 जो बिल्कुल बलात्कार में शामिल थे उनमें से 3 को छोड़ा गया। हर एक ऐसी हिंसा के मुद्दे पर हम तो इजराइल और पैलेस्टाइन का नहीं रोक सकते हैं, तो बहुत दर्द होता है कैसे मारे जा रहे हैं बच्चे, हॉस्पिटल्स कैसे ध्वस्त कर रहे हैं। पैलेस्टाइनियों की ज़मीनें 1948 से छीनने वाले अब गाज़ा पट्टी चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन कम से कम हमारे देश के अंदर जो हो रहा है संविधान के खिलाफ हिंसा का उपयोग है, फासिज्म के जैसी प्रवृत्ति हर निर्णय प्रक्रिया में है, तो हमको तो लगता है कि जनतंत्र स्थापित करने की जिम्मेदारी जन जन की है, आम जनता की। अब आपने देखा किस तरह से अलग अलग लोगों ने अपनी राय रखी। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स डेफिनेटली दीजिए, हमें जानने की बहुत उत्सुकता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।